In the previous video, we have completed LS of the kidney, showing the internal structure of the kidney. And now in this video, we are going to learn the structure of nephron. Nephron कैसे दिखता है? How it is, right? So nephron के बारे में we have कुछ points हमें पता है, जैसे कि नंबर 1, नेफ्रॉन क्या है? तो नेफ्रॉन इज फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, जो काम करता है और उस वजह से किडनी का फंक्शन होता है, दैट इज द फिल्ट्रेशन. So first, nephron is functional unit of kidney, right? Functional unit of kidney. Then एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो each kidney has nearly 1 million nephron. कितने होते हैं? Nearly 1 million. जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें पता चला है कि नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट्स. फर्स्ट इज ग्लोमेरुलस. क्या है? फर्स्ट इज ग्लोमेरुलस एंड सेकंड इज रेनल ट्यूब्यूल. सेकंड इज रेनल ट्यूब्यूल. तो 2 पार्ट है एक नेफ्रॉन में. ईच नेफ्रॉन हैज और ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, ग्लोमेरुलस एंड रेनल ट्यूब्यूल. So first देखेंगे कि ग्लोमेरुलस क्या है. तो ग्लोमेरुलस इज टफ्ट है. टफ्ट मतलब बंच. टफ्ट और बंच ऑफ कैपिलरीज. कैपिलरीज. टफ्ट और बंच ऑफ कैपिलरीज. एक कैपिलरीज का बंच है. टफ्ट ऑफ कैपिलरीज. वो कैपिलरीज कहां से प्रोड्यूस हुई है? तो टफ्ट और बंच ऑफ कैपिलरीज फॉर्म फ्रॉम द afferent arteriole. And afferent arteriole क्या है? It's a fine branch of renal artery. So what is glomerulus? Glomerulus is a bunch of capillaries formed from afferent arteriole. Afferent arteriole. तो इसका डायग्राम निकालेंगे. क्या है? कैसा है? So first part is glomerulus. First part of the kidney is first part of the nephron is glomerulus. मैंने क्या कहा? glomerulus कैसा है? तो glomerulus एक टफ्ट है, bunch of capillaries है. And capillaries कहाँ से आई है? तो capillaries form from afferent arteriole. And afferent arteriole क्या है? It's a fine branch of renal artery. यहाँ पे निकालना. It is क्या है? तो it's a fine capillary of tuft of capillaries. एक कैपिलरी का bunch है, like that. It's a bunch of capillaries, tuft of capillaries. कहाँ से फॉर्म हुई है? तो it is formed from afferent. It is formed from afferent arterioles. Right? So it's a tuft है, capillaries, tuft of capillaries. इसको लेबल करूंगा tuft. इसका है tuft of capillaries. हम उसे क्या कहते हैं? We call it as glomerulus. क्या कहते हैं? We call it as glomerulus. Right? अब ब्लड यहां से आएगा, कैपिलरीज में टफ्ट में चला जाएगा, and blood from glomerulus is carried by another arterioles, and that is efferent arterioles. कौन सा? Efferent arterioles. So feel the difference. Afferent arterioles, which is a fine branch of renal artery. renal artery की एक फाइन ब्रांच है, उसे कहते हैं afferent arteriole. देखो हम
डायग्राम पूरा नेफ्रॉन का डायग्राम बनाएंगे, विल गो वन बाय वन। रेनल आर्टरी का फाइन ब्रांच है एफरेंट आर्टेरियोल डिवाइड्स एंड फॉर्म द टफ्ट ऑफ कैपिलरी जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, एंड ग्लोमेरुलस इज द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के दो पार्ट है, फर्स्ट इज ग्लोमेरुलस एंड सेकंड वन इज द रेनल ट्यूब्यूल। तो हमने फर्स्ट स्टार्ट किया ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है, तो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। ग्लोमेरुलस कैपिलरीज का टफ्ट कहां फॉर्म हुआ है, तो एफरेंट आर्टेरियोल से। एंड व्हाट इज एफरेंट आर्टेरियोल, इट्स अ फाइन ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी, राइट। अब ब्लड यहां से आएगा, कैपिलरीज में चला जाएगा जहां पे बंच है, and blood from the glomerulus is carried by the another arterioles, that is efferent arterioles। अब देखो डायमीटर, यहाँ का डायमीटर ज्यादा है, diameter of afferent arteriole is more as compared to the diameter of efferent arteriole। उससे क्या होगा, ये आर्टियोल का डायमीटर ज्यादा है, इसका कम है, मतलब जनरेशन ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर क्रिएट होगा, एंड दैट इज यूजफुल फॉर फिल्ट्रेशन। So this is first glomerulus. Now second क्या है, second is renal tubule। And renal tubule जो है, तो renal tubule consists of the four parts। First one is Bowman's capsule। कौन सा है, Bowman's capsule। First is Bowman's capsule। अब ये Bowman's capsule कैसा है, तो Bowman capsule is double walled। यहाँ पे मैं निकलता हूँ, Bowman's capsule is double walled। Bowman's capsule is double walled, cup shaped structure, double walled cup like structure, and which encloses the glomerulus। जो glomerulus को enclose करता है उसे क्या कहते हैं, we called it as Bowman's capsule। क्या है, Bowman's capsule कैसा है, तो Bowman's capsule यहाँ पे लिखता हूँ। नंबर वन, Bowman's capsule कैसा है, डबल वॉल्ड। डबल वॉल्ड कैसे दिखता है, कप लाइक। क्या किया है उसने, उसमें एनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस, एनक्लोजेस ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस को एनक्लोज किया है, मतलब दिस इज द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, उसको इसने क्या किया है, एनक्लोज किया है ऐसा, दैट इज Bowman's। So this is the first structure of renal tubule। Renal tubule का एक first structure कौन सा, Bowman's capsule। मैं इसको मिटाता हूँ so that we can write the things here। Bowman's capsule। अब Bowman's capsule leads it into the another highly coiled tube। Bowman's capsule open होता है into the another highly coiled tube, and उसे कहते हैं PCT। Bowman's capsule के स्टार्ट में है, इसीलिए we called it as a PCT, and that is proximal convoluted tubule। कैसा है, highly coiled, it is highly coiled tube like structure, and उसे हम क्या कहते हैं, we called it as the PCT। फर्स्ट है, at the start है, इसलिए we called it as proximal। proximal मतलब at the beginning, at the beginning है, इसलिए we called it as a proximal, right। So this is the second part of the renal tubule। कौन सा, first is Bowman's capsule and second part जो है that is PCT। and PCT क्या है, तो proximal convoluted tubule which is Bowman's capsule leads and highly coiled, coiled है। अब देखो this tubes, जो tubes है उसका स्ट्रक्चर, इन ऑर्डर टू शो द फर्दर मैं ये बिटा के इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे निकालता हूँ so that we can understand each and every part very clearly। अब देखो ये some introductory aspects मैंने ऑलरेडी आपको बताए,
related to the nephron. अब देखो जैसे कि नेफ्रॉन मतलब किडनी के अंदर होता है एंड किडनी हैज टू पार्ट्स, राइट? दिस इज cortex, cortex, and inner is medulla, inner is medulla. जैसे कि पहला स्ट्रक्चर हमने निकाला क्या है, एक बोमन्स कैप्सूल यहाँ पे निकाला था जो है डबल वॉल्ड, राइट? डबल वॉल्ड। इसके अंदर क्या निकाला था, इसके अंदर एक एफरेंट आर्टेरियोल एंड इट शो द ब्रांचिंग, क्या शो करता है, इट शो द ब्रांचिंग, ब्रांचिंग ऑफ कैपिलरीज एंड इसको हमने क्या था, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज एंड इट ओपन्स, राइट? इसको फिर से लेबल करता हूं, दिस इज afferent arteriole, it is afferent arteriole and afferent arteriole is a fine branch of, क्या है, it's a fine branch of renal artery, renal artery, right? This is afferent artery and ये जो part है, this is glomerulus, glomerulus, glomerulus क्या है, तो glomerulus is the tuft of capillaries, capillaries का एक tuft है, bunch है, which is formed from afferent arteriole and afferent arteriole is a fine branch of the renal artery, right? Glomerulus, that is the first part. फिर मैंने कहा कि there is a presence of double walled cup shaped structure which encloses the glomerulus and जिसको कहा Bowman's capsule, ये वाला Bowman's capsule, Bowman's capsule, right? Which encloses this. and फिर कहा कि Bowman's capsule जो है डबल वॉल्ड, यहाँ पे लिखता हूँ डबल वॉल्ड कैसा है, तो डबल वॉल्ड कप लाइक क्या है, एनक्लोजेस, क्या एनक्लोज किया, एनक्लोजेस glomerulus, encloses. So Bowman's capsule is double walled cup like which encloses glomerulus. जब मैंने कहा कि जो glomerulus है, that glomerulus is continued with the highly coiled tube-like structure, हमको लेबल किया, this is PCT, क्या लॉन्ग फॉर्म है PCT का, PCT एट द स्टार्ट है, मतलब Bowman's capsule leads to the highly coiled tubule, उसे कहते हैं PCT, proximal मतलब एट द स्टार्ट, उसे कहते हैं proximal, proximal convoluted, proximal convoluted tubule, कहते हैं proximal convoluted tubule. अब जो proximal convoluted tubule है, that proximal convoluted tubule is leads it into the another tube-like structure, and these another tube-like structures form a hairpin-like structure. One descend down, नीचे जाती है, and then another जो है वो ऊपर जाती है, right? And ये जो hairpin-like structure है, and that hairpin-like structure is hairpin-like structure, and उसे कहते हैं loop of Henle, उसे क्या कहते हैं loop of Henle, this is loop of Henle, ये नीचे जाता है, इसलिए this is known as descending, नीचे जा रहा है इसलिए इसकी तो descending limb, इसका descending limb of loop of Henle, and it goes up, ऊपर जाता है, take a turn, loop here भी, and इसलिए this is ये descending है, ये ऊपर जाता है, that is ascending limb of loop of Henle, this is ascending limb, right?
Then these ascending limb of loop of Henle leads to the another highly tube-like structure, and that is DCT. D मतलब it is present at the last end, इसलिए उसे कहते हैं D and distal open it into the distal, उसे कहते हैं distal convoluted tubule, right? So first one is PCT, Bowman's capsule से जो निकलती है उसे कहते हैं PCT, and ascending limb of loop से जो निकलती है that is the last, that is the DCT, right? Then DCT जो होती है, that DCT opens it into the collecting ducts. This is collecting ducts. And ये जो collecting duct होती है, open it into the renal pyramids, renal pelvis, ureters, and urinary bladder. And that is the direction of flow of urine. Right? So these are. So कितने part हुए? नेफ्रॉन के यहाँ भी फिर से लिखता हूँ कि पहले ही कहा नेफ्रॉन के कितने पार्ट है, तो नेफ्रॉन हैज टू पार्ट्स, कौन से द फर्स्ट पार्ट इज द ग्लोमेरुलस एंड सेकंड पार्ट इज द रेनल टिब्यूल. फर्स्ट इज ग्लोमेरुलस एंड सेकंड वन इज रेनल टिब्यूल. सो फर्स्ट इज ग्लोमेरुलस. दिस इज ग्लोमेरुलस. डायग्राम में आप देख पा रहे हैं glomerulus क्या है, तो tuft of capillary is formed from afferent arteriole, and afferent arteriole is the fine branch of renal artery, glomerulus. Then glomerulus को एक second part of the nephron is कौन सा है, तो renal tubule. renal tubule and renal tubule कितने पार्ट से बनी हुई है, तो 3 पार्ट्स है. फर्स्ट इज Bowman, 4 पार्ट्स है. फर्स्ट वन इज Bowman capsules, Bowman's capsule. This is Bowman capsule कैसी है, double word, cup-like and encloses the glomerulus. Bowman's capsule. Bowman's capsule open it into the highly quadricular structure that is PCT, proximal convoluted tubule. So next is PCT. PCT open it into the hairpin-like structure that is loop of Henle. Loop of Henle, and it have two limbs. एक limb नीचे जाती है and एक limb ऊपर जाती है. So it have ascending limb and a descending limb. The descending limb, ascending limb, open it into the another highly quadricular, and that is DCT. DCT क्या है, distal convoluted tubule, जो end में है इसलिए distal. So last part is DCT. So renal tubule of the nephron have Bowman's capsule, proximal convoluted tubule, loop of Henle, and loop of Henle have the hairpin structure which have the two limbs, नीचे जाने वाले descending, ऊपर आने वाले ascending, and lastly the DCT. And this DCT open it into the collecting duct. This is the structure of the single nephron. Single nephron loop like. Right? अब देखो, मैंने पहले पॉइंट में कहा कि किडनी में दो रीजन्स, आउटर इज कॉर्टेक्स एंड इनर इज मेडुला. वेरी क्लियर. ये जो रीजन है अबाउट द बैक, जो बैक लाइन में ड्रॉ किए थे, दिस इज कॉर्टेक्स, एंड बिलो द दिस इज मेडुला. दो रीजन्स. तो एक नेफ्रॉन में दो पार्ट है, ग्लोमेरुलस और रेनल ट्यूबुलर, इतने पार्ट. तो उसमें से Bowman's capsule number 1, Bowman's capsule, PCT and DCT is present in the cortex, whereas only loop of Henle is present in medulla region. That is very clear cut difference, मतलब लोकेशन, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस पूछते हैं. Which part of the nephron is located in the cortex region and which of the part is located in medulla region. So Bowman's capsule, diagram में आप देख पा रहे हो, Bowman's capsule, PCT and DCT present in cortex. Only loop of Henle present in medulla. अब दूसरा, ये होने के बाद दूसरा पॉइंट, यही डायग्राम.
दूसरा कौन सा, ये जो ग्लोमेरुलस है एंड बोवमन्स कैप्सूल together constitute the Malpighian body. So what is Malpighian body? Malpighian बॉडी और माल्फिगियन और दूसरा नाम है उसको रेनल कार्पस्कल्स, रेनल कार्पस्कल्स और माल्फिगियन कार्पस्कल्स। तो क्या है, फर्स्ट वन इज ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस प्लस बोवमन्स कैप्सूल, प्लस बोवमन्स कैप्सूल, दोनों मिला के क्या बनाते हैं, तो टुगेदर constitute renal corpuscles और माल्फिगियन बॉडी। यहाँ पे कैपिलरीज है, बीच में there is a gap and there is a bones, so these all together this part उसे कहते हैं माल्फिगियन बॉडी और माल्फिगियन कार्पस्कल्स। अब देखो माल्फिगियन बॉडी PCT DCT lies in the cortex region of the nephron, kidney, not nephron, kidney. Whereas only the loop of Henle present in the medulla region of the kidney. That is very important. ये आपको याद रखना पड़ेगा। This Malpighian body किससे बनती है? तो दो स्ट्रक्चर कंबाइन करके Malpighian कार्पोस्कल्स और Malpighian बॉडी बनती है। कौन से? ग्लोमेरुलस एंड बोन्स कैप्सूल, राइट, ऑल टुगेदर। इसके बाद मेजॉरिटी ऑफ द नेफ्रॉन्स, यहाँ भी लिखता हूँ, यहाँ पर ही लिखता हूँ, मेजॉरिटी ऑफ द नेफ्रॉन्स जो है, मेजॉरिटी ऑफ द नेफ्रॉन, ज्यादा से ज्यादा नेफ्रॉन, क्योंकि मैंने पहले ही कहा ईच किडनी हैज 1 मिलियन नेफ्रॉन, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स, मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन, मेजॉरिटी ऑफ द नेफ्रॉन में क्या है, लूप ऑफ हेनले जो है it is too short and runs very little into the medulla. ये लूप ऑफ हेनले जो है is very short and runs very little into the medulla, उसे कहते हैं cortical nephron। तो क्या है, in majority of the nephron क्या है, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले कैसे है, लूप ऑफ हेनले कैसे है, वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट है इसलिए दे रन्स वेरी लिटिल इनटू द मेडुला एंड रन्स वेरी लिटिल इनटू मेडुला, उसे क्या कहते हैं, दीज नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन। उसे कौन से नेफ्रॉन कहते हैं, इज कॉल्ड एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन and these are majority, मतलब near about 80% nephrons present in the kidney are of cortical nephron। क्या होते हैं cortical nephron में, in cortical nephron जो loop of Henle है कैसा है, short and therefore it runs very little into the medullary region and उसे कहते हैं cortical nephron and majority of the nephrons are cortical nephrons। That is the first type of nephron। सेकंड यहां पर लिखता हूं, सेकंड यहां पर लिखता हूं, some nephrons का जो लूप ऑफ हेनले है, some nephron लूप ऑफ हेनले जो है, that loop of Henle runs deep, मतलब loop of Henle is very large, ऐसा है, is very large and runs, large है ये loop of Henle and runs deep, अंदर तक जाता है and runs deep, कहाँ पे, deep into medulla, उसे क्या कहते हैं, this type of nephron is known as juxtamedullary nephron। कौन सा, juxtamedullary nephron।
right? Extramedullary nephron. So clearly कितने टाइप है नेफ्रॉन के? दो टाइप बन गए। नंबर वन कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जिसमें लूप ऑफ हेनले वेरी शॉर्ट एंड रन्स वेरी लिटिल इनटू द मेडुला एंड मेजॉरिटी। कुछ दूसरा टाइप का नेफ्रॉन दैट इज द एक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन। क्या है? लूप ऑफ हेनले इज वेरी लार्ज एंड रन्स डीप into the medulla and it is known as extramedullary nephron. So clear cut, there are two types of the nephron. One is cortical nephron, जो सबसे ज्यादा होते हैं, and second one is the extramedullary nephron. So two types on the basis of the length of the loop of Henle, right? Length of the loop of Henle.